Good evening, everyone. We'll start in a few minutes. Please do ask your fellow mates to join. Good evening, everyone. We'll start in a few minutes. Please do ask your fellow mates to join. Good evening, everyone. We'll start in a few minutes. Please do ask your fellow mates to join.
Good evening, everyone. I hope you all are doing fine. So, first of all, before hopping on to the project ideals and like meeting our speaker for the day, Piyush Bhaiya, I would like to introduce Mr. Kuwar Pratap Singh to you. He's the senior manager at Sharda University, and he has a lot of domains under him, and training and placement is one of those. So, he would like to interact with you all. Welcome, sir. Good evening. Yeah. Hi, Isha. Thanks for the introduction. So, first of all, I would like to thank you all for giving me this opportunity to have an interaction here on this forum. So, my name is Kumar Pratap Singh, and I have joined Sharda University recently, 3 months back. And I'm a senior manager looking majorly at the training and placement. And along with that, I'm looking after various other programs as well. And I'm actually launching various initiatives through which I can raise your voice or the issues which the students are facing to the senior management. Okay. Along with that, I have also recently started a program called Sharda University Showcase Your Student Project Showcase Program. So I have got very less, I will say, registrations for that, but I believe there are many students who have done great job in terms of their project, and I'll request you all to register for that so that we can start working on it. And basically, we'll have to create some short videos where we'll be highlighting your project on our social media platform and to the world. Okay, so I'll be also looking after the training and placement where I have to ensure the maximum participation in the placement drives. Okay, with this, I would also like want to interact with you all if in case you are facing any issues be it related to skills, informatics, or from the placement team. Please reach out to me directly. Okay, I'll share my email ID here and with Isha, so that if in case you'll have any issues, if you are facing any issue related to academics, you can directly reach out to your professors or deans, or else if you need some other assistance, then you can obviously come to us. We will try to help you in whatever way possible. So if anyone who is present here have any concerns, you can ask your queries, or else I'll drop my email ID here. And if in case you'll have any concern, just drop an email to me. I'll definitely revert and will talk to you. And I have a plan that I'll be interacting with all the students who will be coming in the final year, and I'll have one-on-one interaction to understand where they are currently, what actually issues they are facing, so that we can plan what we can do for you so that you get a proper placement, or I'll say a placement with good package. Okay, great. Any questions or any concerns which you want to raise? Because I was interacting few of the final year students who got self placed, actually, who have secured highest placement as well. Uh, you'll be soon able to see their posters and videos on social media platform and in the campus as well. So they have raised few concerns which we actually discussed with the senior management, with the registrar sir, VC sir. So I'm expecting the same from you all so that we can raise those as well to the senior management and get it sorted for you all. Okay. So I hope I'll get more registrations, okay, for the project. And once I launch another program, I'll interact with you all, maybe through this forum or through any other platform. Okay, maybe one on one. So, there's a query in chat box. Okay, I'll just check. Okay, information about placement, or because we do conduct training by the skills team, informatics team. So what sort of information has not been transferred to you? If you clarify, then I'll be able to help. Ronnie, yeah, what is happening in b.tech? Okay,
Uh, no worries. Actually, the problem is what, because I have also sent many emails to the student, but the response which I have got is that they have not checked it because they get multiple emails on a daily basis from what's happening or from other email IDs, right? So I'll try to make some other channels through which I can interact with you all and the students who will be going in the final year. Okay, so that you do not miss any communication from me or from the training and placement or skills or informatics team, right? Sure, I'll do that. I'll just ping my email ID here. So if any of you have any concern, okay, or if you feel that you are not helped, please reach out to me. I'll try to help. Okay, I've pinged my email ID. Great. Any other questions or queries? Please feel free to write to me here or an email. Great. Okay, Isha, thanks for inviting me here. And I think if we are getting more first year student, okay. Okay, I'll definitely help you in this, Madheshwar. Okay, just reach out to me, just drop an email or else call me once you are in campus. We'll see what we can do. We'll visit IoT or the concerned departments. We'll try to arrange the facilities for you. Okay. Those who have concern, please drop an email. We'll connect with you. Okay. Okay. Thanks again for inviting me here, and we'll soon interact with you all one on one. We'll meet there again. Thanks, Thank you Isha. so much, sir, for taking out time. Thank you, sir. Okay. Bye. So now everyone will go to the project deciding point, and I would like to invite Mr. Piyush for that. Piyush Bhaiya, over to you. All right. Am I visible? Yes, we are. Okay. Hello, everyone. Well, some of you might be familiar with me, or some of you might be only seeing me for the first time. I'm Piyush Sharma, b.tech CSE final year, your exact senior, and also someone who's going through something that you guys are gonna be go through for the next year. Basically, the transition from a third year to a final year student. And as far I am aware, आई वॉज वेरी कंफ्यूज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस बिकॉज जब मेरा थर्ड ईयर एंड हो रहा था तो काफी चीजें हो रही थी, बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही थी. सो आई वॉज थिंकिंग कि मेरे जूनियर्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है. हाँ सॉन्ग में ओके आई गेस. Alright, just give me a second. Okay. So before we get on the actual topic, let's just see. First of all, let me ask, how many of you are comfortable with Hindi or English? Because if any of you are not comfortable with Hindi, I will try to cover in both languages as much I can. Is there anyone who is not comfortable with Hindi? Okay, just take a poll. Those who are comfortable with Hindi can raise your hand, please. Okay, I guess I'll cover in both.
That would be convenient for everyone. Okay. Okay. So everyone, uh, uh, your midterm has just ended. तुम्हारे midterm सभी खत्म हुए हैं. So I guess काफी सारा कुछ चल रहा होगा क्योंकि midterm से पहले ही आता है मेरे प्रोजेक्ट का मेल. The mail you have, you guys would have received a mail about major project. So what exactly is major project? Major project is basically the culmination of entire b.tech program of yours. पिछले 4 साल में तुम लोगों ने जितना सीखा है ना, उस सब का रिजल्ट अब दिखाना है तुम्हें. The everything you have learned so far will gonna be show how much have you learned now. अब मेजर प्रोजेक्ट तुम्हारा काफी चीजों में डिवाइड होता है और इट्स लाइक कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ योर डिग्री. So first, actually, let's do one thing. Let's review the mail that you guys have gotten because that would be like much better for you, right? Because there's a lot of jargon there. मतलब बहुत सारी information है वहाँ पे जो सबको नहीं समझ में आती है. Should be? Okay. Mhm. Let's see. I hope my screen is visible to everyone. Okay. So you guys must have received this mail. सबको ये mail आया होगा जिसमें सब कुछ mention है कि as you guys gonna be moving to the 7th sem by the end of June, you guys are gonna become final year students. अब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के पता है सर पे काफी चीज होती है. जिस जैसे कि तुम्हारा लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे प्लेसमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जिन लोगों को जॉब चाहिए उनके लिए प्लेसमेंट सबसे बड़ी चीज होती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइस गॉट फॉर लाइक आउट ऑफ योर बीटेक इज योर जॉब बिकॉज half of the majority of the batchmates or your students opt for a job. There are very few who go for a startups or like higher education, but everything is a part of it. The first thing that comes as with transitioning from third year to fourth year is your placement. Second thing, that's the second most important would be major project. Because the major project consists about 12 credits of your degree. So out of 7 sem and 8 sem, it's gonna form a major part of your GPA. और 7 सेम और 8 सेम के इसी पार्ट की वजह से ना तुम्हारी पूरी जीपीए या तो बन सकती है या बिगड़ सकती है. तुमने अभी तक जितनी मेंटेन करी है ना वो या तो बहुत अच्छी उठ जाएगी या तो बहुत बुरी तरह से गिर जाएगी. There's a lot of things that you have to consider about this. All right? अगर किसी को बीच में कभी भी कोई डाउट हो जस्ट रेज योर हैंड सो आई विल स्टॉप राइट देयर. और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो तब भी रेज हैंड कर देना. आई विल स्टॉप राइट देयर एंड विल एक्सप्लेन टू यू. Coordinators, please coordinate with any query if there's in chat. Okay? Okay. सो अब मेजर प्रोजेक्ट की बात करते हैं. मेनली हम पहले इसको डिस्कस करते हैं उसके बाद हम बाकी चीजों पर भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो मेजर प्रोजेक्ट. ओके. अब देखो मेजर प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन होती है वो तुम्हारे पूरे साल चलेगी. तुम्हारा पूरा फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर एंड एज वेल एज हाफ ऑफ योर थर्ड ईयर. ये जो डायग्राम तुम लोग के साथ शेयर हुआ है दैट बेसिकली शोज यू कि व्हाट यू गाइस आर डूइंग, लाइक कैसे कैसे प्रोसेस होगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट of course the mail you guys received, you guys have received it a few days ago, I guess on 10th March, no sorry 10th February. So that basically comes up with a lot of stuff. First, this diagram that tells you how the process is gonna be, and a lot of documents. So हम हर document के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे so that you can understand what you guys have gotten so far. First are the guidelines. So these guidelines basically define what is gonna happen with, like how your project is gonna be. So इसमें basically इतना ही बताया गया कि तुम्हारा क्या क्या होना चाहिए. तो तुम्हारा जैसे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो तुम्हारे पूरे डिग्री का कलिमेशन है. Everything is gonna be like depends on it because क्योंकि 4 क्रेडिट 7 सेम के और 8 क्रेडिट 8 सेम के. मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा तुम्हारी जीपीए को ये. ओके. अब देखो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे किस तरह के हो सकते हैं. प्रोजेक्ट्स में देखो तुम्हारा बेसिकली जो डिपेंड करता है आउटकम के ऊपर. और आउटकम जो मेजरली मांगा जाता है वो 4 फॉर्मेट में माना जाता है. देयर आर पर्टिकुलरली 4 टाइप्स ऑफ
outcomes. First, the most common one that you have guys going through PBL, research papers. Research paper is the most common outcome you guys have. Okay. Second one is patent. If you guys going for hardware projects, तो तुम्हारे लिए patent एक option है, but patent takes time. So you have to complete everything very early on. Third is hackathon certificates. Hackathon certificates is for those जो जिनको like product ऐसा है जो patentable नहीं है और ना ही like उस पर कोई रिसर्च निकाल सकते हो, तो हैकाथॉन में दिखाया जाता है। ठीक है, तो उनके केस में हैकाथॉन सर्टिफिकेट होते हैं, बट दैट शुड बी लाइक गुड हैकाथॉन। बस पार्टिसिपेशन वगैरह का सर्टिफिकेट से काम नहीं बनता। यू गाइस नीड मच मोर देन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। विनिंग सर्टिफिकेट्स हो या फिर टॉप रैंकिंग्स में, सब जगह उसका कुछ मतलब बनता है। दिस इज वेरी लाइक काफी ज्यादा कॉन्डिसेंडिंग हो सकता है, लाइक बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड आउटकम जैसे यहाँ लिखा है, पहला प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट, जिनका लाइक प्रोडक्ट बेस्ड है, जिनको एक प्रोडक्ट बनाना है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो उनका पूरा कोड बेस, सॉफ्टवेयर वगैरह, हार्डवेयर, एवरीथिंग गोना बी रिव्यूड। सेकंड थिंग इज हैकाथॉन कॉम्पिटिशंस। एज आई सेड, हैकाथॉन के सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज योर पेटेंट। पेटेंट फाइल कर सकते हो, बट पेटेंट के लिए एज आई सेड पेटेंट टेक्स टाइम, सो यू गाइस हैव टू वर्क अ लॉट फास्टर फॉर इट। एंड देन कम्स द कॉमन आउटकम, रिसर्च पेपर, दैट मोस्ट पीपल ऑप्ट फॉर। रिसर्च पेपर के लिए ज्यादा लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज पब्लिश कराने की बात होती है। एक बार तुम्हारा पेपर एक्सेप्ट होके पब्लिश हो गया, यू आर गाइस डन। A patent time, I think I have query. Patent can take about from say 6 to 8 months properly. Your patent application would be granted, but उसका publishing वगैरह में और काफी चीजों में टाइम लगता है। ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। पेटेंट के काफी स्टेजेस होते हैं। पहले पेटेंट फाइल होता है, देन पेटेंट का एप्लीकेशन ग्रांट होता है, उसके बाद फिर उसका रिव्यू होंगे, देन तुम्हारा वो पेटेंट पब्लिश होता है। तो इट्स अ लॉन्ग साइकिल, इसलिए ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम लोग टाइम का आउटकम नहीं दिखा पाओ। एंड द बिगेस्ट थिंग यू गाइस शुड नो, बिना आउटकम के यू आर गाइस आर नॉट गोना पास दिस। एंड द most dangerous thing out of this, if you guys can't clear the 7th semester major project, which is a 4 credits, you are not allowed to continue to 8th semester. पहले 7th सेम वाले मेजर प्रोजेक्ट का आउटकम खत्म होना चाहिए, तभी तुम्हें 8th सेमेस्टर का देने को मिलेगा। इफ प्लीज गॉड ना चाहे ऐसा हो किसी के साथ, अगर 7th सेम में तुम फेल हो जाते हो मेजर प्रोजेक्ट में फॉर एनी रीजन, so you guys will be facing 9th semester. Your degree will be put on hold until you guys clear that. First 7th semester, then 8th semester. These both have to be done. Evaluation scheme में there have been some changes from after 21 batch pass out from basically my senior that when I came in, तब से changes हुए काफी कि project titles would be submitted in 6th semester. So you guys have I guess time limit till 22nd March. मुझे मिली थी 13 March तक। मुझे मेरे सेम टाइमलाइन के अराउंड आया था एंड आई वाज आस्क्ड फॉर 13 March तक था टाइमलाइन। ओके, सो यू गाइस शुड डू दिस। ओके, अब गाइडलाइन समझ में आ गई। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट rest of the things you have to consider. First is teams, team size. Your team have to be either 2 or 3. Single projects are not allowed because you can't prove it as a major project if you are gonna work on it single-handedly. There are people who can handle single-handedly, but वो like as like evaluation panel को प्रूव करना आसान नहीं होता। एंड बिलीव मी, तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं evaluation panel के मूड पे। So make teams either of 2 or of 3 and make teams which are complementary. दोस्ती में कभी मत बनाना टीम्स, काफी डेंजरस हो सकता है। You guys need members who you can trust with it. Because अगर काम नहीं होगा तो तुम लोगों पे भारी पड़ेगा। बट हाँ, एक चीज और बताता हूँ, अगर तुम 2 लोग हो या 3 लोग हो, if you guys are 2 or 3 members, it not necessary
that all of you gonna pass. Yes, it happens. Suppose you have a team of 3, 2 of you are working, third one is not working. And if your guide, the supervisor, does not give approval for them, उस एक member की back लग सकती है. And that one member will be put on hold, rest of you will be continued. And I don't think, और उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा वर्क मैट्रिक्स ही डिवाइड होगा, तुम्हारा जो वर्क का स्ट्रक्चर था उसी में असर पड़ेगा. So please, while making teams, consider those people who are complementary to you, जो उन skills में है एक्टिव है जो तुम्हें नहीं आती है, so that you can divide work properly, because this can be very intensive. A lot of time and effort requires this. Any doubts for so far regarding team formation? Guys, this is not something really official. I just want to share you because मेरे जब आया था मेल, मैं काफी कंफ्यूज था चीजों को लेके, और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था उस वक्त. मेरे सीनियर्स ने कुछ ज्यादा नहीं करा है, सो आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस. सो आई गेस अगर कोई भी क्वेश्चन हो, बट अगर तुम्हें ऑलरेडी आता है, दैट्स वेरी ग्रेट. Okay. Second thing is faculty, the guides. Okay. Each faculty is only allowed 2 projects. Okay. और तुम्हारे टीम के ऊपर 2 तरह से फैकल्टी रह सकते हैं. एक कोर सुपरवाइजर, दैट इज योर गाइड. सेकंड सेकेंडरी सुपरवाइजर और को गाइड. फॉर द एंटायरिटी ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट, योर गाइड इज योर गॉड. दिस इज लिटरल, मजाक नहीं कर रहा हूँ. दिस इज लिटरल. तुम्हें भगवान मान लो उसको, क्योंकि अगर तुम्हारा गाइड डिसाइड करेगा कि तुम इवैल्यूएशन दे पाओगे अगला कि नहीं, तुम्हारा काम अप टू द मार्क है कि नहीं. इफ दे डोंट गिव अप्रूवल, तुम्हें इवैल्यूएशन देने को भी नहीं मिलेगा. तो सेलेक्ट गाइड्स. तो गाइड के साथ कम्युनिकेशन तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए. ठीक है. तो सेलेक्ट फैकल्टीज एज पर, रीच आउट टू एवरी फैकल्टी यू कैन, जिनको तुम्हें लगता है तुम्हारे डोमेन पे इंटरेस्टेड है. ठीक है. सो दैट इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ओनली, बिकॉज कम्युनिकेशन काफी जरूरी है. बिकॉज होता है, कई बार देखा है मैंने प्रोजेक्ट को, जिसमें कभी कभार बच्चे गाइड से मिलते नहीं है, बट क्योंकि गाइड के साथ कम्युनिकेशन है उनका, उनको इवैल्यूएशन देने को मिल जाता है. बट कभी कभार तो हर हफ्ते जाके मिलना होता है, बट उसके बावजूद गाइड अलाउ नहीं करते क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होता. So communicate well with your guide, whoever you selected. We are gonna go deep dive on this later on. Okay. Now the third point is workload matrix and teamwork division. इसके बारे में बताऊंगा जब मैं तुम्हें अपनी पीपीटी वगैरह दिखाऊंगा. I'll show you my project PPTs and everything that you guys gonna understand this. This thing is something that you're gonna require for filling the project form. Okay. Now the fourth point. Once you guys have submitted your project idea, basically form fill कर दिया ये वाला, you guys have filled this form. Now the next thing is gonna happen is your evaluation 0. That is gonna be screening of this, and this is gonna be conducted generally at the end of your practical. So basically, I guess last week of April में तभी होगा ये. Either that or at the starting of your next semester. Well, generally it happens within 6 semester only. So I guess theory exam से पहले ही होगा कि मेरा भी तभी हुआ था. Okay. For that, you guys receive a mail. Just a second. Let me just change my screen. I'll show you. Hmm. Okay. Once you guys have submitted your form, you will receive a list like this. Okay. You guys will be shared a list like this where every guide, co-guide, and every project list would be there. Okay. और उस हिसाब से तुम अपना project number पता कर सकते हो, which will help you identify throughout the process. ठीक है. We'll get back to this. ठीक है. Just for example, my evaluation was conducted on 19th Feb. It was in middle of like after exams and everything. Okay.
तुम लोगों का आई गेस अराउंड अप्रैल एंड में होना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकल्स के अराउंड होता है जनरली। ठीक है, ओके, वैसा है। ठीक है। Please make sure that you guys fill this form before the deadline. Because if you guys fail to do so, random allocation would be done, and trust me, you're not gonna like that. Because फिर ना गाइड तुम्हारी मर्जी से होगा, ना टीम मेंबर तुम्हारी मर्जी के होंगे, ना प्रोजेक्ट तुम्हारी मर्जी से होगा। You guys will be assigned something, बट अगर किसी को ये है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, या टीम मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं, you guys are not finding appropriate team members or appropriate idea, you guys can wait on for like this, कि बस बता दिया जाए हमें क्या करना है, हम उसमें काम करते रहें। So there's an option too, but I would not suggest this. I would like कि you guys try as much you can, reach out to, because the first thing you should know about this, that there's no limitation कि तुम्हें अपने ग्रुप में या अपने सेक्शन में डिपेंडेंट रहना है। You guys can form team around the entire batch, the entire b.tech. डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट्स मिक्स मत करना, दैट चेंजेस द थिंग। सीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई गेस यू आर गाइस अराउंड 600 सम प्लस, मोर देन दैट, व्हाट्स द काउंट, एनी रफ नंबर इफ एनीवन हैज आइडिया? आई गेस ओके, कोई नहीं, लेट्स से मेरे जैसे लाइक मेरे बैच में 450 थे, हम मतलब अभी भी हैं, सॉरी। तो उन 450 स्टूडेंट्स वो आपस में किसी में भी टीम बना सकते थे, डजंट मैटर यू बिलोंग टू सेक्शन ए बी सी डी ई, or you are of specialization, you are a core branch, anything. This does not bind you from making team. So your team can comprise from different specializations. So try as much you can. I would not really suggest waiting for the last day, because काफी केसेस में ये बहुत बुरी तरह बैकलैश करता है। Okay, now let's here comes thing. So one thing you should be aware of, that neither your team, nor your project idea, nor your guide, these three things are not gonna change until the end of your 8th semester. जो तुमने टीम मेंबर्स ले लिए, जो तुमने गाइड ले लिया, को गाइड ले लिया, जो भी तुमने आइडिया ले लिया, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, इट्स नॉट गोना चेंज। गाइड चेंज सिर्फ दो कंडीशन में होता है। पहला, दे लीव द यूनिवर्सिटी, दूसरा, दे लीव दिस वर्ल्ड। आई नो नॉट समथिंग आई शुड से दैट, बट दैट्स द वर्ड्स एग्जैक्टली जो हमें बताए रहे थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू थिंग कि what the main thing around it. So basically your guide can't be changed unless until they leave the university. Okay, so whoever you select with precaution, select with after proper discussion, after your like proper understanding of it, because your guide can change entirety of your major project. कुछ फैकल्टीज होते हैं जो लड़ जाते हैं कि मार्क्स कम मिले, बट कुछ फैकल्टीज ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैन टेक नेम्स, बट I'll just let this to be your judgment. Discuss with faculties and like contact them as much you can, as much you understand them. Pick it very precaution, because your guide can change entire outcome of this. 12 credits is not a joke. अगर तुम्हारी like suppose 8.5 है और अगर मेरे प्रोजेक्ट में बैक लगी ना, so it can drop to 4, नहीं not 4, 5 or 6 immediately. That how much impact it can cause. So choose it with precaution. Okay, I guess there's an query. Evaluation. Okay, I'll come to that. Evaluation का मैं बताऊंगा जब I will be telling about your evaluation. Okay, because evaluation process is very long. Okay. Okay. So let's see. How many of you have finalized your team? Just raise your hands. Let's see. Let me see how many of you have finalized your team.
Okay, that's great. Okay, how many of you have finalized your guide? Okay, the number dropped. And how many of you have no idea what to do right now? Okay, less than I expected, but that's great. That's very great that there are not many people who doesn't have any idea. But don't worry, I will cover everything. So if you guys have any doubt at any point, just raise your hand, okay? Or just drop it in the chat. All right, let's get back to this. So, okay. So we have covered how would be your team size, how should you form your team, how should you approach your guide, and workload matrix and teamwork division, I will come to that. How your project outcome should be, and there's no changing of titles. Okay. The two things, last 2 points would be, first is that in your 7th sem, 65% of the work should be done. Although I will tell you a proper timeline how you should do things so that you get free properly at the right times and you can focus more on other things that are maybe your primary concern, like placements, higher studies, or anything like that. I will come to that as well. Okay. And the remaining part, the 35% remaining part, want to work on any project idea you have. There's a list have been shared with you which features some problem statements. You guys can go through this. I'm not telling you to pick up right from this. Look at this, pick up a problem statement and then search on it. Like what the recent work have been done. इस पे जो भी रिसेंट काम हुआ है जिस भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तुम्हें लगता है कि तुम पे काम करना चाहिए उस पे देखो रिसेंट में क्या क्या हुआ और उसमें अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम दिखती है दैट कैन बिकम योर प्रोजेक्ट टाइटल और प्रोजेक्ट आइडिया प्राइमरी ओके तो जिनको अगर आइडिया नहीं है प्रोजेक्ट का क्या करें तो वन थिंग दे कैन डू दिस ओके प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसमें से कोई पिक करो एंड उसी हिसाब से इवेलुएट करो उसके हिसाब से सर्च करो कि लेटेस्ट में क्या क्या हुआ है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट ठीक है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड दोनों तरफ प्रॉब्लम्स है दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस you want to go for software part or you want to go for hardware thing that's as per your interest. One thing you should consider that those who are specialization students कोर्स सीएससी वालों को तो फ्रीडम है they can do anything they want but if you guys are from specialization you guys are mandated to include your specialization in your major project. AIML के हो तो AIML होना चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट में डेटा साइंस के हो तो प्रोजेक्ट में डेटा साइंस होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के हो तो प्रोजेक्ट में साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए ब्लॉकचेन सो एंड सो ओके सो पिक थिंग लाइक दिस जो तुम्हारे लिए आसान पड़े और तुम्हें लाइक जस्टिफाई कर सके तो तुम्हारी डिग्री किस चीज के लिए थी दीज 4 years जो तुमने पढ़ा है वो क्या है उसका क्या मतलब है उसका क्या आउटकम है ओके एनी डाउट्स ओके ओके अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी नहीं लगे ठीक है बट तुम्हें पता है तुम्हें किस डोमेन में काम करना है तो अनदर थिंग यू कैन डू जस्ट ओपन परप्लेक्सिटी ओके सिंपली आस्क इट recent research trends in let's say computer vision okay now जैसे तुम देख सकते हो it providing me some input like what are the recent research trends कि किस किस पैरामीटर में मतलब किस किस डोमेन में काम हो रहा है कंप्यूटर विजन के अंडर ठीक है अब लेट्स से आई पिक एज कंप्यूटिंग ठीक है सो अब जिनको डोमेन इसमें से मिल गया अगर नहीं मिला तो जस्ट आस्क फॉलो अप क्वेश्चन लाइक स्पेशलाइज इट और एनीथिंग अगर इसमें से तुम्हें लगता है कोई तुम कर सकते हो जस्ट सेलेक्ट दैट एंड देन गो टू गूगल स्कॉलर ठीक है अब जो भी डोमेन तुम्हें
सही लगा है, whichever you have selected, just search that on this. Just a second. Let's say edge computing. Edge computing. And select, click on here so that you get the latest papers, latest research papers. And जो भी तुम्हें टॉप पे पेपर दिखे उनको रीड करना स्टार्ट करो. पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू एब्स्ट्रैक्ट, go through methodology, and go through the conclusion, like what you guys gonna go through. Okay. इससे क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि उस डोमेन में रिसेंट में क्या क्या हुआ है. ठीक है, सो दैट यू गाइस डोंट रिपीट एनीथिंग. बिकॉज अगर किसी को लगता है तुम्हारे इवैल्यूएशन पैनल को कि ये काम हो चुका है, सो ऑफ कोर्स इट गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन कि व्हाट यू गाइस आर डूइंग. सो अनदर वे इज दिस. जिनको नहीं उसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाली पीडीएफ में, एक्सेल शीट में नहीं पसंद आ रहा है, दे कैन डू दिस. ओके, दिस इज वन ऑफ द वे. अगर इतनी मेहनत भी नहीं करनी, so you guys have been shared a list of faculty members with their contacts and their projects. Okay, let me just open that. Okay, where was I? Yeah, here. This is the domain of the faculties. Okay, every faculty that is involved in CSE, this is for primarily for CSE. Other departments would receive lists for their departments only. Okay, फैकल्टी का नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका केबिन नंबर, एंड व्हाट द रिसर्च डोमेन्स दे हैव. एवरी फैकल्टी हैव सम काइंड ऑफ रिसर्च डोमेन्स व्हिच दे स्पेशलाइज इन. बिकॉज़ सबने कुछ काफी ने पीएचडी कर रखी है, काफी पीएचडी कर रहे हैं, तो अब उनके पास अपने आप रिसर्च के लिए कुछ ना कुछ होता ही है. अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें अपने एंड से आइडिया नहीं आ रहा, but you are clarified on the domain you want to work, then reach out to the faculty who works on the same domain and ask them if they have something to discuss. ठीक है, मेजॉरिटी केस में उनके पास पहले से प्रोजेक्ट होते हैं जो उनको करने होते हैं, बट उनको एज क्योंकि वो फैकल्टीज है, उनको क्लासेस वगैरह लेनी, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता. ठीक है, बट एज मेजर प्रोजेक्ट स्टूडेंट यू कैन हेल्प विद दैट. ओके, तो जिनको उतनी मेहनत नहीं करनी है, परप्लेक्सिटी रिसर्च वगैरह नहीं करनी है, दे कैन डू दिस एज वेल. ओके, so I told you 3 different ways to get ideas. जिनके पास आइडियाज, प्रोजेक्ट आइडियाज नहीं है, पहला जो एक्सेल शीट शेयर हुई है उसके बेसिस पे करो. दूसरा, research on your own, whatever domain you wanna work with. If you have not any specific domain, just go through the latest research papers, what have been gonna research, recent research trends, anything like that. फिर उसके बेसिस पे और डीप रिसर्च करो and find a problem statement for yourself. और lastly, just reach out the faculty. They will help you out. मेरे केस में मेरे को भी आइडिया क्लियर नहीं था, so I reach out to the faculty which I wanna work with. मुझे ये पता था मुझे काम किन फैकल्टी के साथ करना है. I reach out to them. उन्होंने मेरे को तरीका बताया, सेम जो मैंने तुम्हें सेकंड फॉर्म में बताया कि रिसेंट रिसर्च पेपर्स को निकालो, उसमें सर्च करो, एंड फ्रॉम देयर ओनली आई गॉट माय फॉर माय मेजर प्रोजेक्ट. वी विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर ऑन, जब मैं पीपीटी वगैरह के साथ तुम्हें दिखाऊंगा सारी चीजें. ओके, तो आई गेस दैट शुड क्लियर हाउ टू गेट एन आइडिया. ओके, टीम फॉर्मेशन का भी मैं बता दिया, गाइड्स को भी अप्रोच करने का बता दिया. एनी डाउट सो फार? Just a second, is there, let me see the doubt. Bhaiya, what if some domain like mono full stack, their faculties are not available? See, the thing is, जो like basic domains होते हैं, for example, your merge stack. I'm not saying that way, but basically like almost everyone do web development at some point. So they are जो projects तुम लोग बनाओगे उसमें इतना research का कुछ वो होता नहीं है. ठीक है, उनका outcome निकालना थोड़ा difficult होता है. So the most common thing you guys can incorporate is AI. That's the least amount of thing you can do to it. कोई डायरेक्ट फैकल्टी फुल स्टैक वगैरह की नहीं होती है, क्योंकि रिसर्च फुल स्टैक में नहीं होती. फुल स्टैक में कोई रिसर्च नहीं होती. इट्स नॉट समथिंग यू कैन गाइस कैन रिसर्च ऑन. सो यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग टू ऐड टू इट, जिसमें तुम उसे उस लेवल पे ला सको. देखो, यू गाइस कैन क्रिएट अ वेबसाइट, यू गाइस कैन क्रिएट एन ऐप, बट इट शुड इंक्लूड समथिंग जिसमें तुम्हें लाइक कुछ निकाल सको कि हमने कुछ करा है. ठीक है, कुछ करा है. डोंट हैव टू गो फुल इनोवेटिव, कुछ एकदम नया बनाने की जरूरत नहीं है. अगर तुम्हारा मन है, प्लीज ट्राई, नोबडी गोना स्टॉप यू, बट कीप इन माइंड, अगर नहीं कर पाए तो तुम पे ही भारी पड़ेगा वो बहुत ज्यादा.
ठीक है, full stack using AI और Web3, हाँ that can work. So reach out to faculties जो AI या Web3 के हैं, okay, reach out to them. क्योंकि देखो जो AI वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कभी ना कभी फ्रंट एंड या बैक एंड बनाना ही पड़ता है, तो उनको भी फुल स्टैक यूज करना ही पड़ता है, बट उनका मेन आइडिया AI पे डोनेट करता है, मतलब रिवॉल्व करता है. सो दे रीच आउट टू फैकल्टीज हु आर एफिशिएंट इन AI. ओके, सेम थिंग यू हैव टू डू. जैसे तुम अगर लाइक फॉर एग्जांपल वेब 3 में जा रही हो, ओके, सो रीच आउट टू फैकल्टीज हु आर involved in Web3 or blockchain technology, so that they can tell you how can you incorporate that. Okay, that will make your project a bit more suitable for major project. Okay, uh, ठीक है. So I guess we are covered on team formation, project deciding, and guide approaching. Okay, now shall we move on to the evaluation process, or do anyone have any else doubts about this? Okay, okay, okay. Before we move on to evaluation processes, the documents you have to submit, let's look at the Google form you guys have been shared with, so that you guys are aware to me what documents you are going to require. Okay, so the first detail you are guys gonna require is of course a guide. Okay, so जिनका गाइड फाइनलाइज हो जाए सेलेक्ट दैट. ओके, लेट्स से परमन सर ले लिए तुमने, प्रोविसी सर हमारे, दैट इज ही इज योर गाइड, एंड डोंट बी स्केर्ड ऑफ हिम. ही इज वेरी लाइक, ही इज वेरी हेल्पफुल इन दिस काइंड ऑफ थिंग. ही इज वेरी हेल्पफुल एंड ही इज वेरी लाइक, you guys really can approach him for major topic guide. Okay, let's say परमन सर हमने गाइड सेलेक्ट कर दिया. ओके, you selected it. Now co-guide, it this is not mandatory. Co-guide is generally required जब तुम्हारा प्रोजेक्ट हो उसमें दो डोमेन हो. ठीक है, जनरली तब तुम्हें को-गाइड की जरूरत पड़ती है. जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट हो गया, उसमें एआई भी है और ब्लॉकचेन भी है. ऑफ कोर्स एक फैकल्टी को दोनों तो नहीं आ सकते, और आते भी हो तो ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज एक ही में होगा. सो यू कैन मेक, जो भी तुम्हारा जिस भी तरफ तुम्हारा प्रोजेक्ट डाइवर्ट करता है, उस फैकल्टी को तुम अपना गाइड ले लो, और जो सेकेंडरी डोमेन है उसको को गाइड ले लो, सो दैट यू कैन डिस्कस इट. बट कीप इन माइंड, अगर तुम लोग को गाइड लेते हो, सो को गाइड इज एज इंपॉर्टेंट एज योर गाइड. तुम्हारा को गाइड तुम्हारे गाइड के एब्सेंस में तुम्हारा अप्रूवल भी दे सकता है, ठीक है, बट अगर, और उन दोनों के अप्रूवल पे ही तुम्हारा इवैल्यूएशन हो सकता है. अगर किसी एक ने भी रोका तो तुम्हारा इवैल्यूएशन कंटिन्यू नहीं होगा. ठीक है, सो अगर को गाइड सेलेक्ट करना तो सोच समझ के करना. ठीक है, ओके. So let's say I'm not selecting a co-guide. Then comes title of the project. So once you have finalized your idea, once you have finalized your team, once you have finalized your guide, now you're gonna fill this form. This Google form is very necessary. इसके बिना काफी गड़बड़ हो सकती है. So now you're gonna add title of the project, whatever you have. Let's say for example मैं अपना secondary title use करूंगा. I propose two different ideas for major project, जिसमें से मैंने एक select करता. तो मेरा second idea था एक मेडिकल इमेजिंग रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था. ठीक है, तो लेट्स से वो टाइटल ऐड कर लिया. अब add your team size, 2 members to 3 members से, it's very simple. Add your name, your system ID, your roll number, and what's the category of your project. मैंने ये पहले समझाया था, I'll explain it again. First, simulation or hardware. Those who are going for hardware, select this. Second, experimental research. जिनको जो अपना आउटकम एज रिसर्च पेपर सेलेक्ट करेंगे, they will go with this. Those who are gonna select their outcome as product or hackathon, they're gonna go with this. Okay, those who are gonna go for a comparative analysis or something, but basically research paper का ही तरीके से. So second ideal is this. देखो रिसर्च में तुम्हारे पास दो तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं. पहला, जो पहले से एग्जिस्टिंग है उनके साथ कंपैरिजन कर लो. दूसरा, कुछ नया बना दो. इफ यू आर डूइंग समथिंग न्यू, मेकिंग समथिंग इंट्यूटिव, इनोवेटिव, then you can go for experimental research. If you are not doing something that novel, that new, you can go for comparative analysis. Okay, automation, then as if your product contains some kind of automation, then this is your go-to thing. Then you're gonna upload screenshot of approval. Okay, how you gonna do this?
you guys write a mail like this. Okay, this is my mail which I wrote for my guide. Okay, this mail is to confirm the project title for major project 1 and 2. There's my project title. Okay, I attach the major project abstract, something like this, that what the abstract of your idea and what the base paper you have considered. No matter what kind of project you're gonna do, you will have a base paper because research तुमने करी होगी. Okay, ठीक है, and this kind of screenshot needs to be attached. You have to get approval on the mail. इसका स्क्रीनशॉट अटैच करा जाता है. WhatsApp approvals are not validated. They are not considered at all. ठीक है, that will be entered here. Then passport. Now each member of your team have to fill this form separately. तुम्हारे हर मेंबर को भरना होता है, एक के भरने से नहीं होता. ठीक है, सबको भरना है. तो ये पासकोड क्या है? पासकोड इज बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई कि तुम सेम टीम के मेंबर्स को. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पासकोड दिया PS4 को. ठीक है, अब मुझे अपने टीममेट के साथ सेम पासकोड शेयर करना है. तो जब वो गूगल फॉर्म भरेंगे वो ये सेम चीजें भरेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन इजी होगा और दे विल बी एलोकेटेड एंड माय टीम अंडर द गाइड आई सेलेक्टेड. ओके, इन केस अगर तुम ये गलती से किसी को बताया और उसने अपना भरने के बजाय ये भरा, तो वो तुम्हारी टीम में असाइन हो जाएगा. और एक बार टीम असाइन हो गई, इट्स नॉट गोना चेंज. एंड मैं मजाक नहीं कर रहा. फॉर मेजर प्रोजेक्ट people can be lot more deceptive. So please be very careful while filling this form. मिस्टेक नहीं होना चाहिए. हो सके तो जितने मेंबर हो साथ में भरो. Then your contact details. Then comes synopsis. What is synopsis? Okay. So you guys have been shared another document that is project synopsis. Yeah. Okay. So this is basically तुम्हारा जो भी project title है उसका like एक inscription है, like what you guys are gonna do. Okay. I'll show you mine कि तुम्हें कैसे बनाना होता है. ठीक है. Let me just open this. Okay. This is mine. ठीक है. So this is my synopsis. दिया नंबर प्रोजेक्ट टाइटल. ठीक है, यहाँ टीम मेंबर्स के नाम उनके सिस्टम आईडी के साथ, योर गाइड एवरीथिंग, दैट विल बी अ टाइटल पेज. This you can get in index table of index. This can be done. Then comes abstract. Abstract will basically be comprised of the like एक पैरा में तुम कितना समझा सकते हो. ठीक है, एक पैरा के अंदर तुम्हें अपना पूरा आइडिया समझाना है. दैट वुड बी योर एब्स्ट्रैक्ट. ओके. देन कम्स मोटिवेशन. लाइक व्हाट्स द मोटिवेशन बिहाइंड दिस. तुम्हें इस डोमेन में क्या इशू दिखा जिसकी वजह से तुम्हें ये प्रोजेक्ट प्रपोज करने का आइडिया आया. ठीक है, तो दैट विल बी योर मोटिवेशन. जैसे मेरा प्रोजेक्ट आइडिया था ऑटोनोमस व्हीकल के अराउंड. तो मेरा वही था कि ऑटोनोमस व्हीकल अब रिसेंट राइज में है, तो उनकी सेफ्टी और एफिशिएंसी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स उनका वैसे कंट्रोल नहीं है, और कार्स क्योंकि मूव करती रहती है रोड पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो उनकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी इज वेरी नेसेसरी. दैट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड प्रपोजिंग माय आइडिया. ठीक है, सो सम काइंड ऑफ दिस. देन कम्स लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली वही आता है जो तुम लोग अभी तक पीवीएल में कर रहे हो रिसर्च पेपर के नाम पे. बट कीप इन माइंड, मेजर प्रोजेक्ट इज फार डिफरेंट फ्रॉम पीवीएल. उस पीवीएल को सीरियस लिया ना हो या ना हो, मेजर प्रोजेक्ट को प्लीज ले लेना. ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू विल कंसिस्ट कि तुम्हारा बैकग्राउंड कितना है, जिस भी डोमेन को तुम काम करो, जिस भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को काम करो, उसके बैकग्राउंड में अब तक कितना काम हुआ है. ठीक है, सो यू कैन प्रॉपरली टेल. जैसे मेरे में मैंने डिस्कस करा है कि क्या क्या टेक्निक यूज हुई थी लेन डिटेक्शन में. ठीक है, फिर वो कैसे ट्रांसलेट हुए, क्या कौन से डेटा सेट आए, उसके आगे आगे. ठीक है, फॉलोड बाय रिसर्च पेपर एवरीथिंग. देन मेथोडोलॉजी. ठीक है, मेथोडोलॉजी इज बेसिकली द प्रोसेस यू आर गोना फॉलो इट. इट वाज सिंपल. ये स्पेसिफिक, ये जो मैंने लिखा है ये फॉर है एएमएल, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट एएमएल का है, मैं स्पेशलाइजेशन एएमएल है, तो मेरा एएमएल के रिलेटेड था. ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड. ओके, इसको बहुत ग्रैंड होने की जरूरत नहीं है. इट कैन बी वेरी सिंपल. जिनका मान लो और कोई प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, तो यू कैन गाइस रिप्लेस एल्गोरिथम डेवलपमेंट टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इट्स वेरी गॉना सिंपल. भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर लो, फिर उसकी टेस्टिंग कर लो, डिबगिंग. You guys can add steps like this. Okay, then technologies to be used. What's gonna be your tech stack, what's gonna be your hardware requirement.
अब फॉर एग्जांपल जैसे मशीन लर्निंग में होता है, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए तुम्हें हार्डवेयर चाहिए होता है, हेवी हार्डवेयर, तो जैसे जीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम वगैरह, और वॉट एवर टूल्स यू वांट टू यूज, दैट शुड बी एडेड टू इट, and references. Okay. Once you have done this synopsis, you mail this to your guide. They approve this, and then you upload that to this Google form. Okay. Okay. Now comes the workload matrix. Okay. Now, what is workload matrix? Workload matrix is basically how you divide work among your team and among the entire timeline. Okay. Now let me show you that. Okay. Let me see. Where was I? ठीक. Okay. Is my PPT is visible? Okay. With every evaluation, देखो टोटल 8 इवैल्यूएशन होते हैं 7 सेम और 8 सेम को मिला के, ठीक है, काउंटिंग फ्रॉम इवैल्यूएशन 0 टू इवैल्यूएशन 7. इसमें तुम्हारे 2 एक्सटर्नल होंगे, एक 7 सेम के एंड में और एक 8 सेम के एंड में, ठीक है. 8 सेम में 3 होते हैं, इवैल्यूएशन 0 6 सेम में होता है, और इवैल्यूएशन 1 टू 4 वुड हैपन इन 7 सेम. ओके. तो इसका पीपीटी का फॉर्मेट तुम्हें मेल आ जाएगा जब तुम्हारा प्रोजेक्ट असाइनमेंट हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें पीपीटी का फॉर्मेट आ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दिस. ओके. नाउ व्हाट इज द वर्कलोड मैट्रिक्स? So workload matrix basically look like this. Okay. The timeline goes from April to April. That's your project timeline primarily. तो इसमें बेसिकली डिफाइन करना होता है कि तुम्हारा कौन सा काम कब तक चलेगा, ठीक है. टू मेक दिस यू डोंट हैव टू कॉपी दिस. इसको समझ सकते हो तुम लोग, देख सकते हो, जैसे मेरे प्रोजेक्ट के केस का था. इनिशियल रिसर्च फॉर 2 months, देन डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल, राइटिंग ऑफ रिसर्च पेपर, सिमुलेशन डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. You have to cover entirety of this. April 24, for your case, it's April 25 to April 26. Okay. This is your workload timeline. Okay. To make it exact, you have to discuss it with your guide. As the form states, कि तुम्हारे गाइड के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है. तो अपने गाइड से अच्छे से पूछना कि उनको किस तरीके से करना है, ठीक है. बट इट वुड बी समथिंग सिमिलर टू दिस. ओके. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? I guess none. Okay. The other thing is the work team division. Okay. So your task should be divided like this. Okay. This should be approved by your guide only. कि तुम्हारा टीम में काम कैसे डिवाइड होता है. तो फॉर एग्जांपल मेरी टीम में इस तरह से डिवाइड कराया था. एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग एक को भी, बाकी दोनों का काम था रिसर्च पेपर और सिमुलेशन को इम्प्लीमेंट करना. ठीक है. क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट फिजिकली दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, so I gone for simulation video like this. Okay, I can show you the video. Just give me a second. Yeah. So you guys can see this. This is a simulation video for जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर, ऑटोनॉमस नेविगेशन के ऊपर. बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट फिजिकली दिखाना, ऑफ कोर्स मैं एक प्रॉपर वर्किंग कार तो लाऊंगा नहीं चेक कराने के लिए अपना पूरा प्रोजेक्ट. तो ऐसा कुछ. ओके. अब तुम्हारी टीम का कैसा रहेगा वो तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि तुम्हारे वो प्रोजेक्ट के ऊपर है. सो डिस्कस विद योर गाइड, डिस्कस विद योर टीम मेंबर्स एंड डिवाइड इट अकॉर्डिंगली. दैट्स व्हाई आई आस्क यू टू मेक टीम्स कॉम्प्लीमेंट्री. ऐसी टीम्स बनाओ जो तुम्हारी स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करे, ताकि तुम काम डिवाइड कर सको. ऑलराइट. ओके. अब पीपीटी बनाने की डिटेल्स पता है कहाँ से आती हैं? पीपीटी की डिटेल्स आती है रूब्रिक से. ठीक है. अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था 8 इवैल्यूएशन हुए टोटल. वेयर वाज दैट मेल? या हियर. देयर विल बी टोटल ऑफ 8 इवैल्यूएशन. पहला इवैल्यूएशन 0, जिसमें तुम्हारा टाइटल अप्रूवल होगा.
अगर तुम्हारा टाइटल अप्रूवल नहीं होता इवैल्यूएशन 0 में, तो तुम बाकी की इवैल्यूएशन तब तक कंटिन्यू करोगे जब तक तुम टाइटल अप्रूव नहीं कराते। ठीक है, तो पहला इवैल्यूएशन इज वेरी क्रिटिकल, इवैल्यूएशन 0 इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू, तो इसके बिना तुम काम स्टार्ट नहीं कर पाओगे। वंस यू पास इवैल्यूएशन 0 देन कम्स सेमेस्टर 7। ठीक है, इनकी टाइमलाइन डिवाइड होती जाती है। आई विल टेल यू हाउ दिस गो। ओके, मैं अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे मेरा इवैल्यूएशन 0 वही हुआ था, आई गेस हाँ अप्रैल में हुआ था। ठीक है, उस दौरान कुछ इस तरह का मेल आता है। Let me just open this, where you are assigned panel members like this. Okay, प्रोजेक्ट नंबर असाइन होगा तुम्हें स्पेसिफिकली, जैसे मैंने तुम्हें पहले लिस्ट दिखाई थी। यू गाइस विल बी शेयर्ड अ लिस्ट लाइक दिस, जिसमें तुम्हें प्रोजेक्ट नंबर असाइन होगा। योर आउटकम विच विल फीचर एवरीथिंग, तुम्हारा गाइड, को गाइड, टीम डिटेल्स, प्रोजेक्ट टाइटल, कैटेगरी, तुम्हारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तुम्हारा आउटकम क्या है और तुम्हारा प्रोजेक्ट नंबर। ये प्रोजेक्ट नंबर पूरे उसके दौरान सेम रहेगा। ठीक है, और इसी से तुम्हारा पैनल डिसाइड होता है हु विल बी इवैल्यूएटिंग यू। ठीक है, मोस्ट जितने भी तुम्हारे इंटरनल इवैल्यूएशंस होंगे जो 7 सेम के हैं, जैसे कि एक सेकंड, ये इवैल्यूएशन 0, इवैल्यूएशन 1, 2, 3, इवैल्यूएशन 5 एंड 6, इसके दौरान मेजरली तुम्हारा जो पैनल यहाँ डिक्लेयर होता है इस वाले में, दैट विल स्टे सेम। ज्यादातर केस में सेम होता है, कुछ कभी का फैकल्टी चेंज होते हैं। ओके, और जिनका ये वाला है ऑरेंज वाला, दैट वुड बी योर पैनल कोऑर्डिनेटर, जो बेसिकली मेन पर्सन होता है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा तुम्हारे पैनल इवैल्यूएशन पे। ये शारदा के फैकल्टीज होंगे। ठीक है, और ये बेसिकली उस डोमेन के लाइक नॉलेज रखते होंगे जो तुम्हें उसमें है, तुम्हारा जिसमें जिसके भी रिगार्डिंग तुम्हारा प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट डिवीजन। ओके, तो तुम्हें जब भी इवैल्यूएशन करना होगा, तुम्हारा रूम नंबर, टाइम स्लॉट और पैनल, इसके साथ मेल आ जाया करेगा। और हर मेल के साथ आया करेंगी दो और चीजें, एक स्टूडेंट डायरी और पीपीटी फॉर्मेट। ठीक है, फॉर एवरी इवैल्यूएशन you will require PPT, you will require report and you will require your diary. ठीक है, पीपीटी और रिपोर्ट में जो चेंजेस होते हैं वो रूब्रिक शीट के अकॉर्डिंग होते हैं। रूब्रिक शीट में जैसे जैसे चीजें इंट्रोड्यूस होती जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट इवैल्यूएशन होता है तुम्हारा डिजाइन आइडिया के ऊपर कि तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई करा है। सेकंड इवैल्यूएशन होता है तुम्हारे डिजाइन के ऊपर कि उसका वर्क फ्लो कैसा है, डीएफडी डायग्राम्स वगैरह ऐसी चीजों के ऊपर इवैल्यूएशन होगा। थर्ड इवैल्यूएशन हैपेंस ओवर कोड इम्प्लीमेंटेशन, उसमें तुम्हारा कोड में डीप डाइव करा जाता है। सो एवरी इवैल्यूएशन हैव अ डिफरेंट पर्पस, हर इवैल्यूएशन में डिफरेंट एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करा जाता है, तो उसकी डिटेल्स तुम्हें उसके थ्रू मिलती है। ओके, रूब्रिक शीट के थ्रू। तो जब भी तुम्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चेंज करना हो या पीपीटी में चेंज करना हो, लुक एट द रूब्रिक शीट। अगर उसमें कंफ्यूजन है तो गाइड से पूछ लेगा, बट गाइड भी यही सजेस्ट करेगा तुम्हें कि रूब्रिक शीट में। अब पीपीटी और रिपोर्ट के अलावा जो तीसरी चीज तुम्हें मेंटेन करनी है, दैट इज स्टूडेंट डायरी। ठीक है, दिस इज बेसिकली लाइक जर्नल की तरह है तुम्हारा कि तुम हर हफ्ते क्या क्या कर रहे हो, लाइक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरह। ठीक है, कीप इन माइंड यू आर मैंडेटेड टू मीट योर गाइड एटलीस्ट वंस अ वीक सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इवैल्यूएशन 0 से स्टार्ट होके एंड तक, प्रोजेक्ट खत्म होने तक, यू आर रिक्वायर्ड, मतलब इट्स अ रूल टू मीट योर गाइड एटलीस्ट वंस अ वीक। बट अपने गाइड से डिस्कशन करके, कुछ लोग, कुछ गाइड्स होते हैं वो लाइक ऑनलाइन मीट्स भी कर लेते हैं, कुछ गाइड्स होते हैं जो फिजिकल मीट पे रहते हैं, कुछ भी होते हैं जिनसे तुम महीने महीने ना मिलो फिर भी तुम्हें अलाउ कर देंगे, कुछ है जिनसे तुम रोज मिल लो तब भी दिक्कत करते हैं। सो इसको फिल कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ योर, कि हर हफ्ते तुम्हारा कितना काम हुआ है। अब कीप इन माइंड, जितने तुम्हारे टीम मेंबर्स होते हैं, एज पर योर गाइड, you have to either maintain a single diary for the entire team or you have to maintain separate diary for each of the team members. ये तुम्हारे गाइड पे डिपेंड करता है how they gonna take it. Okay, so उनके अकॉर्डिंग हो रहा है और तुम्हारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हो, टॉपिक फाइनलाइजेशन इसको फिल करते रहना होता है हर हफ्ते और इस पे साइन होने चाहिए तुम्हारे। ठीक है, योर प्रोजेक्ट डायरी आर गोना सबमिटेड ट्वाइस, पहला 7 सेम के एंड के एक्सटर्नल में, दूसरा 8 सेम के
एक्सटर्नल है। ओके, 2 टाइम सबमिट होंगी तुम्हारी प्रोजेक्ट डायरी। उसके अलावा जो सबमिट होता है दैट इज जस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हर इवैल्यूएशन में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होती है, ठीक है। उसमें चेंजेस उसी हिसाब से होते हैं जैसे पीपीटी में होंगे, एंड दैट डिपेंड ऑन रूब्रिक। ओके, तो देखो प्रोजेक्ट डायरी में 2 चीजें होती हैं। पहला ये इंडेक्स टाइप थिंग जिसमें तुम्हारे सिग्नेचर्स होंगे, एंड सेकंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। ओके, आई विल शो यू माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट सो दैट यू गाइस हैव अ सिंपल आइडिया कि हाउ यू गाइस हैव टू फिल दिस। ओके, लेट मी जस्ट चेक मेरी कहाँ पे है। It's loading, it's loading. Just give me a few seconds. Any doubts so far? और कुछ ऐसा हो या समझ नहीं आ रहा हो, या everything is clear for you guys? Okay, this one doesn't have it. Okay. Mhm. Yeah. Okay. This is something like this because you guys have to sign it every week. Okay. इस तरह से फिल करना होता है, और इनका फिर डिस्क्रिप्शन वे में लिखना होता है कि इसका क्या क्या होता है, कि तुमने ये काम पूरा कैसे करा। जैसे कि इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, कहाँ गया, एक सेकंड, नहीं इसमें नहीं है। वही वीक नंबर, डेट ऑफ विजिट, वीक डिस्क्रिप्शन जो तुमने बेसिकली वहां ऊपर लिखा है, और उसी को डिटेल में एक्सप्लेन करना कि व्हाट हाउ डिड यू डू दैट। ओके, कीप दिस ऑल ऑफ दिस फॉर यू हैंडी। ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से मेंटेन रखना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट ओनली। ओके, okay, with that I have concluded everything I wanted to tell you guys about major project. If anyone have any kind of doubt regarding anything, team formation, guide approaching, or any like evaluation formats, feel free to put in the chat. Okay, let me see the, लेट्स से हमने डिसाइड कर लिया कि हम रिसर्च पेपर लिखेंगे, हमें पब्लिश भी करा लिया, तो क्या पब्लिश पेपर इन द चैनल ऑफ पासिंग ऑल द मेंबर्स? यस, इट डज। देखो दैट डिपेंड्स कि तुमने आउटकम में क्या करा। जैसे यहाँ देख रहे हो, अगर तुम्हारा आउटकम रिसर्च पेपर है, ठीक है, तो तुम्हें देखो 7 सेम के लिए एक रिसर्च पेपर चाहिए, 8 सेम के लिए एक रिसर्च पेपर चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारा पेपर पब्लिश हो जाता है तो कंसिडर ऑल ऑफ यू पास, एज लॉन्ग एज तुम्हारे गाइड ने तुम्हें इवैल्यूएशन के लिए अप्रूव दिया, तो दैट इंक्रीजेस चांस ऑफ पास। ओके, यू गाइस कैन गो फॉर मल्टीपल आउटकम। ठीक है, ओके, वन थिंग, हाँ इससे अच्छा, थैंक यू, इससे मुझे एक चीज याद आ गई। आउटकम, प्लीज सेलेक्ट योर आउटकम विद प्रॉपर लाइक कंसिडरेशन। इफ यू गाइस आर सेलेक्टिंग रिसर्च पेपर, तो तुम्हें 2 रिसर्च पेपर चाहिए होंगे, एक 7 सेम का, एक 8 सेम का। ठीक है, अब रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। इफ यू सबमिट इट टू अ कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस का वो आउटकम तब माना जाएगा व्हेन यू गाइस हैव रजिस्टर्ड फॉर द कॉन्फ्रेंस। ओके, व्हेन यू गाइस हैव रजिस्टर्ड फॉर द कॉन्फ्रेंस, मतलब पेमेंट हो चुकी है, उसके बाद ही वो आउटकम के लिए माना जाएगा। एक्सेप्टेंस पे नहीं माना जाता, क्योंकि काफी बच्चे एक्सेप्ट करा के पब्लिश नहीं करते। ठीक है, तो अगर रिसर्च पेपर के लिए जा रहे हो तो ट्राई, अगर कॉन्फ्रेंस में दोगे तो वो रजिस्ट्रेशन होगा, वरना ट्राई फॉर जर्नल्स। जर्नल्स में अनपेड पब्लिश होता है, बट फॉर दैट यू हैव टू फिनिश योर टास्क वेरी अर्ली, बिकॉज अ जर्नल पब्लिकेशन कैन टेक फ्रॉम 3 वीक्स टू 6 मंथ्स। ओके, और 2 रिसर्च पेपर बनाने हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा ये काम। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आउटकम का हो गया। आई गेट टू योर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इफ यू गाइस आर गोइंग अ हैकाथन प्रोजेक्ट, सो हैकाथन का विनिंग सर्टिफिकेट
या टॉप 3 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बट वो एक ही के लिए है, तो तुम्हें दूसरे के लिए भी कुछ प्रिपेयर करना होता है, तो एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेट लगेंगे तुम्हें। ओके, और पेटेंट का सिंपल है, पेटेंट का काफी लंबा प्रोसेस होता है, तो सेम थिंग उसका भी वही है कि एक पेटेंट कराना होगा तुम्हें, बट वही प्रोसेस लंबा होता है, तो उसके लिए काम जल्दी देखना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा ये 2 चीजें नहीं ऐड हुई है कि टाइटल इंडस्ट्री रिलेटेड है या एसडीजी से लोकेटेड है, इसके लिए तुम्हें गाइड से डिस्कस करना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट अलाइन करता है कि ओके। So that will be your outcome. Now the next question: is it necessary to deploy also? Okay, if you guys are making a product type thing, like a live industry type project type thing, जिसको तुम्हें प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो हाँ तुम्हें डिप्लॉय करके दिखाना पड़ेगा, बट ये नहीं है कि बेसिकली लाइक तुम्हें लाइव ऑडियंस चाहिए या लाइव कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। ओके, तो उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अ सेकेंड, आई गेस प्रेजेंटेशन की जरूरत है मुझे, आई विल गेट बैक टू दिस। ओके, एंड ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हेलो भैया, यू मेंशन सिमुलेशन वीडियो। ओके, सिमुलेशन वीडियो वाज टू कन्विंस अबाउट माय आइडिया। ओके, मेरी देखो पीपीटी में क्या है, जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट आइडिया है, मेरा प्रोजेक्ट आइडिया था ऑटोनोमस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। अब मेरे को अगर मेरा प्रोजेक्ट आइडिया दिखाना है, शो करना है, तो इट्स लाइक एक ड्राइविंग ऑटोनोमस कार ड्राइविंग दिखाऊं, ठीक है, सो दैट्स नॉट डन फॉर मी। अब मेरा सिमुलेशन वीडियो जो है वो मेरा इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है, तो मेरे को आइडिया एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑल्दो मेरा आउटकम इज रिसर्च पेपर, बट दैट इज लाइक कि इट हेल्प मी एक्सप्लेन माय आइडिया। अब देखो सिमुलेशन वीडियो आउटकम में तब काउंट होगा जब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो हार्डवेयर बेस्ड बहुत हैवी जैसा है, जैसे मान लो कोई ड्रोन वगैरह का है तुम्हारा, ठीक है। अब तुम पूरा ड्रोन को लाइक एक्चुअल आउटकम में दिखाना चाहते हो, जैसे मान लो सर्विलेंस ड्रोन। अब सर्विलेंस ड्रोन के लिए तुम कुछ वैसे लाइक वेपन वगैरह तो लाओगे नहीं, तो उसमें क्या है, उसके लिए तुम एक सिमुलेशन वीडियो बना के दिखा सकते हो ना, तो उसलिए वो ऑब्लिक में लिखा होता है सिमुलेशन स्लैश हार्डवेयर, ठीक है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Project approval needs approval from both guide and co-guide. Okay. Project evaluation, देखो, it's not compulsory to take a co-guide. It's completely your choice. Okay. It's completely your choice to make, or it can be like suggested by your guide only. ठीक है? But it's not compulsory to take a co-guide. But if you take a co-guide's decision is as important as your guide. In case guide और co-guide की अच्छी बनती है, सो तुम्हें ज्यादातर केस में करना नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे केस में है, मेरे गाइड और को गाइड की अच्छा था, तो मुझे सिर्फ अपनी गाइड से मिलना पड़ता था, को गाइड के पास नहीं जाना पड़ता था, ठीक है, डिस्कशन करने के लिए। अदरवाइज इफ ऐसा केस है कि तुम्हारे 2 डिफरेंट डोमेन, जैसे मैंने सजेस्ट किया था, को गाइड किस लिए लेते हैं जब 2 डिफरेंट डोमेन पर काम करते हैं, इफ यू आर गोना वर्क ऑन 2 डिफरेंट डोमेन, सो ऑफ कोर्स फॉर दैट डोमेन यू हैव टू गो टू द गाइड फॉर दैट अप्रूवल, एंड फॉर द अदर डोमेन यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द को गाइड। So the sheet is shared with every faculty as guide and co-guide, जहां उन्हें अप्रूवल मार्क करना होता है। ओके, अगर उन्हें वहां पे मार्क नहीं करा, तो जो इवैल्यूएशन पैनल के साथ शीट शेयर होगी उसमें तुम्हारा अप्रूव नहीं होगा, एंड इफ अप्रूव नहीं होता, so you guys will be send it back, you guys, और who जिसका भी अप्रूवल अलाउड नहीं होगा, he or she will be send it back. Okay, otherwise it's not mandated to take a go guide, it's completely your choice. ज्यादातर ग्रुप्स लेते भी नहीं है go guide. Okay, I guess we have 10 more minutes. Okay. So yeah, what if we are doing an offline internship out of state and can't come on the evaluation day? Can we get any such permission? Okay. So देखो, if you guys are doing an internship, you guys will be on NOC. तो NOC केस में क्या होता है, तुम्हारे टीम मेंबर्स आके ऑफलाइन देते हैं, और जो जो भी NOC पे है उसका ऑनलाइन होता है अलग से बाद में, मतलब ठीक है। तो उनके लिए मीटिंग्स अरेंज कर जा रही है, देयर इज अ प्रोविजन फॉर दैट। ओके, तो जैसे जैसे तुम इसको डिस्कस करोगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू विल गेट परमिशन फॉर टू गिव दैट ऑनलाइन। ओके, तुम्हें अगर आना पड़ेगा तो वो सिर्फ फाइनल इवैल्यूएशन होगा जो सबसे एंड में होगा। ओके,
हाउ वाज योर फाइनल इवैल्यूएशन एक्सपीरियंस? देखो, मेरे अभी 2 इवैल्यूएशन बचे हैं, ओके? मेरा 8 सेम का भी एक ही हुआ है, मेरे अभी 2 इवैल्यूएशन बचे हैं, एक एक्सटर्नल फाइनल इवैल्यूएशन और सेकंड लास्ट इवैल्यूएशन। मेरा लास्ट इवैल्यूएशन बहुत अच्छा था, आई डिडन्ट हैव एनी मच प्रॉब्लम बिकॉज़ मेरे को फुल मार्क्स मिले हैं, ठीक है? बिकॉज़ द थिंग इज़ यू हैव टू कन्विंस द इवैल्यूएशन पैनल कि तुम्हारा जो आइडिया है वो अच्छा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कन्विंसिंग पावर, ठीक है? कभी-कभार लोगों का आइडिया अच्छा नहीं होता, बट उनकी कन्विंसिंग पावर ऐसी होती है कि वो मना लेते हैं। बट कीप इन माइंड फाइनल नंबर तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम्हारा आउटकम होगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इवैल्यूएशन मैं अगर मैं सारे इवैल्यूएशंस की बात करूँ, माय इवैल्यूएशंस आर लाइक अप एंड डाउन। मेरा एक अच्छा जाता है, अगला वाला खराब हो जाता है। बट दैट क्योंकि वही है, पैनल मेंबर कभी-कभार चेंज हो जाता है, कभी-कभार पैनल सुनता नहीं है। देखो दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस, बट यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि बात वही है, तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर है ऑल। So make your project good, make work on it properly, and then you guys are not gonna have any problem. Trust me, you guys are not gonna have it. If you have worked on your project like genuinely, you guys won't face any particular problem. Okay? Okay. Any more questions? What happens? We sign up for b.tech honors degree because I heard somewhere that we have two additional project in 8th. Just a second. b.tech honors. Okay. Yashika, to answer your question, you can go for multiple outcomes for the safe side. Okay, there's no issue to it because you have to show different outcomes for both semesters, but it depends on your guide and evaluation panel only. But you can go for multiple outcomes as I have told already. Okay. Now, Madhvesha, for you for BTech honors. Well, as far I am aware, in our college, the honors degree depends on whether or you never get a backlog. Okay, but you don't have to do any particular additional project. The project remains same, but it should have two different outcomes in that format. Okay. Okay. What if we choose two outcomes? For example, a research paper and hackathon. Can we show research paper 7 and hackathon 7? Yes, you can. Yes, you can do that. बेसिकली जितने लोगों का पेटेंट है या हैकाथन प्रोजेक्ट है ना, वो ज्यादातर यही करते हैं। 7 सेम में रिसर्च पेपर देंगे और 8 सेम में हैकाथन सर्टिफिकेट। बिकॉज हैकाथन जीतना आसान नहीं होता, इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो यू कैन डू दैट। ओके, all right. Okay, we have 7 more minutes. Anything else regarding major project or anything else regarding your final year? No doubt. Hmm. Okay, that's very great. If there are any more doubts, I think we can conclude the session. Well, I guess that's it. Okay. Everyone, thank you for joining. I really appreciate you guys joining because it's a lot. क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट इज वेरी बिग थिंग एंड आई एम हैप्पी कि तुम लोगों को लगा कि मैं कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ। बिकॉज होते हैं डाउट, मुझे खुद टाइम पे बहुत ज्यादा थे। somebody raise hand.
ठीक है. I hope you guys learned a lot and you guys will share it with your teammates or your friends or anything. Cause doubts होते रहेंगे और मेजर प्रोजेक्ट चलता रहेगा. But keep in mind तुम्हारी डिग्री का सवाल है. Okay. Thank you everyone. Yes, भैया. हेलो. Hello. हाँ भैया, आप अगर रुक सकते थोड़ी देर आपके अंदर मीटिंग. हाँ ठीक है ठीक है. Okay.